गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कोआलास। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा होते हैं कोआलास, लेकिन पिछले कुछ सालों से इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इनकी पॉपुलेशन को हम वल्नरेबल कैटेगरी से उठाकर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में डालेंगे। तो अब हुआ क्या है कि बहुत ड्रॉट हो गई आई थी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। इवन ब्लैक समर बुश फायर्स आपको याद होगा 2019 में लगी थी। तो कोआलाज उसमें बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट हुए थे। फिर बहुत सारी डिसीज़ हैं जैसे क्लैमिडिया। क्लैमिडिया एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो कि कोआलाज में होती है। फिर अर्बनाइजेशन, जंगल कट रहे हैं, फॉरेस्ट जो है वो जो आपका कंक्रीट जो है वो एक्सपैंड हो रहा है अर्बनाइजेशन की वजह से, हैबिटेट लॉस हो रहा है उनका कोआलास का उसी की वजह से। ठीक है, तो अब जो है पॉपुलेशन ऑफ कोआलास जो है ऑस्ट्रेलिया में 25 मिलियन साल से वहाँ पर कोआलास रहते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही स्पीशीज़ रह गई है, फैस्को लैक्टोस सेनेरस। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि जब से यूरोपियंस जो वहाँ पर सेटल हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तब से जो है हैबिटेट लॉस देखने को मिला है कोआलास का, क्योंकि वो अपनी अर्बन सेटलमेंट्स बढ़ाते रहे हैं। तो जो हम कोआलाज होते हैं ये यूकेलिप्टस खाते होते हैं। ठीक है, यूकेलिप्टस के लीव्स खाते हैं। हर रोज़ ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम के ये लीव्स खाते हैं, लेकिन इन लीव्स की कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, इसलिए जो है ज़्यादातर जो है कोआलाज स्लीप करते हैं ताकि वो अपने न्यूट्रिशन को बचा सकें, क्योंकि वो वैसे ही कम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो अब 2019 में जब बुश फायर्स हुई तो ये इनका हैबिटेट लॉस हो गया बहुत ज़्यादा। इनके पहले ही बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू कम थी, ज़्यादा सोते थे, और भी जब पेड़ जल गए तो इनके जो है उसकी वजह से 60,000 कोआलास को लगभग इम्पैक्ट हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वन ओशन समिट। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने एक हाई लेवल सेगमेंट को एड्रेस किया है वन ओशन समिट को, और जो कि फ्रांस द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और फ्रांस में ही ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के साथ कोऑपरेट करके फ्रांस ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत सारे सेवरल हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स ने जो इसको एड्रेस किया है। और जो ऑब्जेक्टिव क्या था इस समिट का, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट जो है वो मोबिलाइज़ किया जा सके कि हम हेल्दी और सस्टेनेबल ओशन इकोसिस्टम्स कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है चिंतामणि पाड्य नाटकम। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली 100 साल पुराना चिंतामणि पाड्य नाटकम जो है उसको बैन कर दिया है। अब 1920 में इसको कलाकुरी नारायण राव जी ने लिखा था। अब इसमें चिंतामणि जो है वो एक बेसिकली एक कार्टिसन, जिसको हम आप प्रोस्टिट्यूट भी कह सकते हो, तो वो होती है जो कि लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी होती है, लेकिन उनको जो है सुबी शेट्टी जो है वो पसंद करते होते हैं, वो उसको कोट करते हैं। और ये जो सुबी शेट्टी जो हैं ये आर्य वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस जो है, वैसे तो ये प्ले जो है बहुत अच्छे सोशल मैसेज के साथ था, लेकिन आपको पता है जैसे आपके हमारी बॉलीवुड मूवीज़ करती हैं या हमारी मूवीज़ जो करती हैं, इस प्ले को एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाना शुरू कर दिया गया कुछ सालों से। तो उसमें जो सुबी शेट्टी जो कैरेक्टर है उनका बहुत मजाक उड़ाया गया। तो जो आर्य वैश्य कम्युनिटी थी उन्होंने जो है गवर्नमेंट्स को बहुत बोला कि आप इसको बैन करो, इसमें हमारी कम्युनिटी का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको नेगेटिव लाइट में दिखाया जा रहा है। इसीलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको बैन कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है श्री माधवाचार्य जी। सो पीएम मोदी जो है उन्होंने श्री माधवाचार्य जो है उनको माधव नवमी पर जो है ऑबिसेंस पे किए हैं। तो माधवाचार्य जी कौन थे, तो इनको हम पूर्ण प्रजन और आनंद तीर्थ भी कहते थे। ठीक है, कहते हैं। और एक हिंदू फिलोसफर थे जो कि द्वैता स्कूल ऑफ वेदांता को प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, उन्होंने इसको प्रपोज भी इन्होंने ही किया था। और द्वैता स्कूल क्या कहता है, द्वैता स्कूल कहता है कि ब्रह्मांड, नॉट ब्राह्मण ऑफ कोर्स, ओके। सो ब्रह्मांड और आत्मा ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि ब्रह्मांड जो मतलब सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर सब हमने जाके जो है वो मिल जाना है, वो अलग एंटिटी है, और आत्मा एक अलग एंटिटी है। ठीक है, तो डुअलिज्म ये कहता है। लेकिन जो जैसे एडवाइटा फिलॉसफी है वो कहते हैं कि ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मतलब हम उन्हीं से निकले और वहीं पर वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये द्वैता जो है ये अलग चीज़ें हैं, ये अलग एंटिटीज़ मानता है इनको, ब्रह्मांड को और आत्मान को। ठीक है, तो माधवा जो है उनकी फ़िलॉसफ़ी का नाम तत्ववदा था, जो कि उन्होंने कहा था कि हम एक रियलिस्ट व्यू पॉइंट से आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, फ़िलॉसफ़ी से ज़्यादा वो रियलिस्ट व्यू पॉइंट से उन्होंने आर्गूमेंट दिए। उनकी सबसे ग्रेटेस्ट वर्क हम अनुव्याख्याना कहते हैं कि उनकी सबसे ग्रेटेस्ट वर्क थी वो आदिशंकरा के अद्वैता वेदांता और रामानुज के विशिष्ट द्वैता वेदांता को उन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ भी किया था। उन्होंने एक कृष्ण मठ भी एस्टेब्लिश किया उडुपी में, जो कि जिसमें उन्होंने एक कृष्ण की मूर्ति को जो है द्वारका गुजरात से जो है वो लाकर वहाँ पर एस्टेब्लिश किया। ठीक है,
सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ट्यूलिप मेनिया। तो अभी जो आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी पर गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाया, उसके बाद आरबीआई गवर्नर जब वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बता रहे थे, मतलब एड्रेस कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला कि ये जो है क्रिप्टो करेंसी थ्रेट टू मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। उन्होंने ट्यूलिप मेनिया को इन्वोक किया। ये एक इंसिडेंट था, ट्यूलिप मेनिया 17th सेंचुरी में हुआ था, जिसको हम ये भी कहते हैं कि वो फर्स्ट फाइनेंशियल बबल ऑफ द वर्ल्ड था। तो आरबीआई गवर्नर ने क्यों कंपेयर किया है ट्यूलिप मेनिया के साथ, ये भी देखते हैं। तो उन्होंने बोला क्रिप्टो करेंसीज के पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट तो है नहीं, ठीक है, जैसे हमारी करेंसी के पीछे तो गोल्ड रिजर्व्स हैं या फॉरेन करेंसीज हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के पीछे कोई एसेट ही नहीं है, कोई अंडरलाइंग एसेट है ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट डिजिटल करेंसीज जो हैं वो बहुत ही बड़ा थ्रेट है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम से उनको माइन किया जाता है, कोई लीगल टेंडर नहीं है, तो ये हमारी करेंसीज के लिए भी एक थ्रेट है, ठीक है। तो हम देखते हैं ट्यूलिप मेनिया क्या था। ट्यूलिप मेनिया और आप क्रिप्टो करेंसी को कंपेयर करो, देखो आपको लगेगा कि दोनों सेम ही है। तो ट्यूलिप मेनिया में क्या हुआ, 17th सेंचुरी की बात है, हॉलैंड में जो है लोगों ने ट्यूलिप, आपको बताया एक फ्लावर होता है, उसका जो बल्ब है, मतलब जो उसका आप कह सकते हो कि जो उसका फ्लावर है, मेन फ्लावर, उसी को ही जो है वो बेचना शुरू कर दिया, उसको उसको उसके ऊपर स्पेकुलेशन करनी शुरू कर दी कि ये, मैं एग्जांपल दूं कि मैं आपको एक फूल तोड़ के कहूँ कि ये 2 लाख का है, ये आप उससे खरीद लो, जो आप आगे वाले को बेचो वो 3 लाख का, ठीक है। तो एक स्पेकुलेशन चल रहा है, कोई असल में उसकी वैल्यू थोड़ी ये 2 लाख की है या 3 लाख की है। तो स्पेकुलेशन का एक बबल है, वो कभी ना कभी तो बर्स्ट होगा, कोई ना कभी तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब लोग कहेंगे नहीं इसकी वैल्यू नहीं है इतनी, इसके पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो यही क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है, जिसका मन करता है वो कोई भी रेट कोट कर रहा है, कैसे जो है डिमांड और सप्लाई सिर्फ स्पेकुलेशन के ऊपर चल रही है। तो उन्होंने इसी के साथ कंपेयर किया कि जैसे ट्यूलिप मेनिया एक दिन कोलैप्स हुआ था मिड 1600s में, वैसे ही ये क्रिप्टो करेंसी भी कोलैप्स होगा, क्योंकि ये सिर्फ स्पेकुलेशन के ऊपर चल रहा है। स्पेकुलेटर्स जो है वो अपना प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं, जैसे आपको पता होगा, किसी ने एक्सपीरियंस किया तो एलन मस्क यही करते थे, ट्वीट कर देते थे किसी एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और जैसे ही लोग उसको परचेज करते थे तो उसके प्राइस बढ़ जाते थे, वो अपना बेच के उस क्रिप्टो करेंसी को एग्जिट कर देते थे, ठीक है। तो यही ट्यूलिप मेनिया है। स्पेकुलेटर्स जो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वो किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बढ़ाते हैं, आपके पैसे जो है वो आप उसमें इन्वेस्ट करते हो और एकदम से जो है वो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और लोग जिन्होंने पैसे बनाने हैं वो अपना प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं, ठीक है। तो स्पेकुलेशन पे चल रही है पूरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सर्वे ऑफ डिफेंस लैंड। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स जो है उन्होंने 17.78 लाख एकड़्स ऑफ डिफेंस लैंड को सर्वे किया है, पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में ऐसी एक्सरसाइज की गई है, ठीक है। तो इस सर्वे में क्या पाया गया है, तो इसमें सर्वे में देखा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास अबाउट 18 लाख कह सकते हो, 18 लाख एकड़ लैंड है, जिसमें से 1.61 लाख एकड़ लैंड वो है जो कि जिसमें कैंटोनमेंट्स बसे हुए हैं हमारे, ठीक है। तो 18,000 एकड़ वो लैंड है जिसमें जो कि स्टेट ने हायर कर लिया या फिर अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वापस करना है, ठीक है। अब जो है ये सर्वे कैसे किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिकली किया गया ऑफ कोर्स ये सर्वे, ठीक है। जीपीएस का यूज़ किया गया, ड्रोन सैटेलाइट इमेजरी का यूज़ करके ये सर्वेस किया गया, और इसको जो है एक्यूरेट और टाइम बाउंड रिजल्ट इसमें मिले हैं हमें, ठीक है। अब ये डिफेंस एस्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफेंस एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जितना भी लैंड है उसको मैनेज करती है ये, और जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होती है 62 कैंटोनमेंट्स की, हमारे इंडिया में 62 कैंटोनमेंट्स हैं, उनकी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी डिफेंस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ही देखती है। तो जो इसी के ही डायरेक्टरेट जनरल होते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स, वो एक इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब तीनों सर्विसेज के उसमें जो है वो आपके चीफ जो है वो मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है ये, और ये कैंटोनमेंट जो एरियाज़ हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is koalas. So you know that there you may have seen very lovely photos of koalas. Even there was one photograph during the 2019 summer bushfire where a koala was crying and a person was giving him water. Okay, so koalas have been suffering in Australia for a very long period of time, and their population or their habitat has been declining, and their population of course has also been declining. So that's why Australia has decided that they will be classifying them as
endangered. Okay, so currently they are vulnerable species, but now because of their decline in population, Australian government has decided that they will be classified as endangered species. Of course, in most of the territories like Queensland, New South Wales, and Australian Capital Territory. So, a threatened species scientific committee has made this recommendation, and based upon that, Australian government has made this decision. So, there were certain reasons behind the decline of the population of koalas. So, the first one was prolonged drought. Okay, so there was an El Nino impact, and even black summer bushfires were there in 2019. Disease, especially this chlamydia. So this chlamydia is a sexually transmitted disease which happens in which occurs in basically the koalas, and it has impacted them, their population, a lot of its population. Apart from disease, urbanization is also to be blamed, which is leading to habitat loss. We are cutting down forests and they are dependent upon forests. Okay, so there is a threat to these species also, a lot of threat to this species. Okay, so population of koalas in Australia have these koalas have been inhabiting Australia for at least 25 million years, but now only just one species is there in Australia. The species has been declining for over the years. Okay, so what is the threat to koala population? So since the Europeans have settled in Australian region, koala population has faced widespread habitat loss because of course, expanding agriculture and construction of urban settlements. So you know that they take just 1 kilogram of eucalyptus leaves every day, and the eucalyptus leaves have a very low nutritional value. That's why these koalas have to sleep for a very extended period of time, about 18 hours a day. So during the 2019 bushfires, an estimated 60,000 koalas were impacted because they were sleeping. They must sleep because they are taking low diet, but these bushfires impacted the forest, and it led to almost 60,000 koalas being impacted. Okay, so they have these vast swaths of land have been burned down, and these forests have been rendered unlivable because of such bushfires. Okay, so now let us see the next topic, which is One Ocean Summit. So PM Modi has recently addressed this high level segment of One Ocean Summit, and this summit has been organized by France, and it has been organized in cooperation with United Nations and the World Bank. So the purpose of this summit was to mobilize international community to take some tangible action towards preserving and supporting the ocean ecosystems. Okay, so now let us see the next topic, which is Chintamani Padya Natkam. So recently, Andhra Pradesh government has banned this 100-year-old play. It was written in 1920 by a playwright named Kalakuri Narayan Rao. So this play is about Chintamani, who is a courtesan. So those who do not know courtesan, an offensive word could be a prostitute. So she was a devotee of Lord Krishna, and she was quoted by Subbi Shetty. So he was a businessman, and he belonged to Arya Vaishya community. Of course, this is all just fiction. Okay, it is not true. It is just fiction, and because through this novel, or through this work of through this play, Kalakuri Narayan Rao is merely desiring to give a social message. Okay, so originally it had a social message, but over the years, like that our Bollywood does or our film industry does, they have modified this play purely for entertainment. So to make it entertaining, they have vilified the character of Subbi Shetty, and the Arya Vaisya community has been made fun of. Okay, so that's why Arya Vaisya community requested the Andhra Pradesh government to ban this play, because they say that it portrays them in a negative light, and based upon that, Andhra Pradesh government decided that this play would be banned in the state since on January 17th. Okay, so now let us see the next topic, which is Shri Madhvacharya ji. So PM Modi has paid obeisances to Shri Madhvacharya ji on the occasion of Madhva Navami. So he was also known as Purna Prajna and Anand Tirath. So he was a Hindu philosopher, and he was the chief proponent of
Dvaita school of philosophy. Okay, so according to this Dvaita school of Vedanta, Brahman and Atman are two different entities. Unlike Dvaita or Advaita, which considers them as one, Brahman, that is the supreme consciousness. For some people, they consider it as God also, but it is just a rudimentary understanding of Brahman. If we say that it is God, that it would be a rudimentary understanding, because in broader sense, Brahman means everything. It is all pervading, it is everything, it is present everywhere, it is in everything, not just on earth but in the entire universe. Even universe is a part of it. Okay, so it considers Brahman as separate from Atman. Okay, so this Dvaita is a dualism philosophy. So Madhava called his philosophy Tattvavada, which means that he was giving arguments from a realist viewpoint. Okay, so his greatest work is considered to be Anuvyakhana, and he was a critic of Adi Shankara's Advaita Vedanta as well as Ramanuja's Vishishtadvaita Vedanta. Okay, so he even established Krishna Mutt at Udupi with a murti that he secured from Dwarka, which is in Gujarat. Okay, so now let us the next topic, which is tulip mania. So recently, after the government decided to impose 30% tax on gains made from cryptocurrency, RBI Governor Shaktikant Das has termed cryptocurrency as a threat to macroeconomic and financial stability. So, when he was announcing the bi monthly monetary policy outcome, he cautioned that this cryptocurrency is a bubble, a financial bubble, which is similar to the 17th century tulip mania, which is considered as the first financial bubble. And he said that cryptocurrencies have no underlying asset. Okay, like your rupee is backed by gold reserves or foreign currency. This cryptocurrency is just merely driven by speculation. It does not have any asset behind it or underlying it. Okay, so RBI has always taken a strong stance against private digital currencies, and RBI governor has warned once again that it will threaten the macroeconomic and financial stability. And one day, when this bubble will collapse, it will lead to people's fortune being lost. Okay, so what is tulip mania? Let us see that. So tulip mania is basically the first case of financial bubble, in which in during mid 1600s, what people did in Holland is that they just pluck the flower of tulip and they started selling its bulb. Okay, basically the flower. So like I pluck a flower from a park, and I just sell it for 1 lakh rupees. Okay, I'm saying it may not actually be 1 lakh rupees, but if you purchase it, it actually becomes a 1 lakh rupee flower. Okay, so then that's 1 lakh rupee flower. You can sell it to another person saying that it is a 1 lakh rupee flower. I will sell it to you, it is very unique, only if you pay me 2 lakh rupees. Okay, so if that person purchases it also, so it does not have any intrinsic value. That flower is worth maybe less than 5 rupees, but because you are selling it more than 1 lakh or 2 lakh or 3 lakh, it is just based upon speculation. It does not have any underlying asset behind it. This flower, the value of 1 lakh rupees is not derived by backing it up with a 1 lakh rupee gold reserve. Okay, so it is just based upon speculation, and I have made profit of 1 lakh rupees. You have also sold it for 2 lakhs, so you have also made a profit of 2 lakh rupees. Let's say the third person sells it for 10 lakh rupees, then he would be making a profit of 7 or 8 lakh rupees. Okay, so it is just based upon speculation. This is what is happening in cryptocurrency also. Just speculation is driving this cryptocurrency market. Like I'm giving an example, one more example. So like I was giving you an example of Elon Musk. So just he, whenever he wants to make a fortune, he tweets something in support of a cryptocurrency. So people just rush towards that cryptocurrency, and when people start buying that, it drives up the price of that particular cryptocurrency. He sells that cryptocurrency whenever the price goes up, and he makes a fortune. And when he sells a lot of cryptocurrency, because of course takes he makes a stock of that currency, the prices fall once again, and the people who have invested in it because of trusting Elon Musk, they repent because they lose a fortune. Okay, so similarly, this cryptocurrency market is also driving up
on the same basis as that of tulip mania. That's what RBI governor is warning to the people. So let's see when this cryptocurrency bubble would collapse, or would it collapse. Okay, so let's see the next topic, which is survey of defense land. So Directorate General Defence Estates has completed the exercise of surveying the 17.78 lakh acres of defence land, and this is the first time this exercise has been done in India after independence. So Ministry of Defence has found that it owns about 18 lakh acres of land, out of which 1.61 lakh acres of land is located within the 62 notified cantonments. Okay, so cantonments are areas where there is residence and where this military facilities or even civilians may reside. Okay, so 18,000 hectares of land is that land which has been hired by state, or it is proposed to be transferred to other government departments. Okay, so how the service was done? Of course, it was done electronically using drone and satellite imagery, GPS based systems, so that they can get accurate and time bound results. Okay, so about the defense estates organization, it is the agency responsible for the management of defense lands, and it also takes care of the municipal administration of 62 notified cantonments in the country. So the Directorate General of Defense Estates, which heads this organization, is an inter-services organization. So basically all these three services are represented in this organization, and they directly control the cantonment administration. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with you. Until then, goodbye and take care.